Hello everyone, welcome back to my channel IELTS Groomers by Urvashi. Today's video is about the recent cue card for July 2023. One of my students got the same cue card and many of the students asked me to prepare this cue card for them. So let's get started with it. So the cue card is describe a historical period or a time you want to know more about. Say what the event is it, when did it happen, who or what was involved in it. सो ये बहुत सिंपल सा और बेसिक सा क्यू कार्ड है जहाँ पे आपको वो किसी पुराने समय या एक हिस्टोरिकल आपको समय की बात पूछ रहा है जो आपको पता होनी चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या हिस्ट्री बतानी पड़ेगी, क्या हमें इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ बताना पड़ेगा. आप कोई भी हिस्टोरिकल पीरियड बता सकते हो. आइदर इट इज़ अ टाइम ऑफ कोविड, यू कैन ऑल्सो डिस्कस अबाउट इट. आप कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आपको लगता है कि वो वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस है, बिकॉज आप इसमें झूठ नहीं बोल सकते अपने एग्जामिनर को. एंड आपने वो इवेंट बताना है. पहला क्वेश्चन ये है व्हेन डिड इट हैपन. आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि वो हिस्टोरिकल इवेंट कब हुआ. कोई बाढ़ आई या कोई रेनफॉल से कुछ नुकसान हुआ या अर्थक्वेक आया, एनीथिंग. ठीक है, तो आपको वो पता होना चाहिए कि व्हेन डिड इट हैपन, हु और व्हाट वाज इन्वॉल्व इन इट. मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, या क्या क्या सिचुएशन में क्या क्या इन्वॉल्वमेंट्स थी. So the answer to the question is I literally feel ashamed while saying that I have no interest in history, and I clearly remember I just passed my history exam during 10th standard by cramming the facts. However, here I would like to talk about a historical event on which I feel very proud to celebrate it. It's none other than 15 August. In it was celebrated as a Independence Day. I believe every Indian, irrespective of age, celebrate this auspicious day. Every school, college, hospital, office, or other professor whatsoever. It is definitely celebrated this day with full of enthusiasm, and everyone feels proud on this day as much. I know about this day there is a great historical background behind. Like for the very first time, this day was celebrated on 15th August 1947, and that day is named as Independence Day, was declared for this. And from that day till now, we are celebrating. We have been celebrating this day as well history before this day approximately 200 Britisher rule India. They overtook every industry, every business profession, government and treasure of India. Even they made more Indian slaves. The Indian people were working as slaves in those days. However, few freedom fighters such as Bhagat Singh, Mahatma Gandhi, Sukhdev Singh, and so on metal with the Britishers and forced them to run away from India with the collaboration of all freedom fighters. India got independence on 15th August 1947. Today, this special day, feel people glory and glad and proud to celebrate this day. Apart from this, on this special day, people like to post stories on the martyrs and freedom fighters and have a deep respect for them. Although I'm migrating to Canada, I believe till my last breath I will be an Indian whenever and my wherever my motherland needs me, I will definitely stand for it. So I think this 15th August is a wonderful day. I would definitely celebrate wherever in future I would be. So that is the all sum up. You can talk about your cue card in that way. I know many of you would say that it is a very lengthy process, but once you will be having a habit of preparing the cue card through the points, all you need to do is create a point,
of the sub questions you have been given in exam for 1 minute. That's how you will develop your ideas and you will be generate the whole story from yourself. So next type is the follow up. That's the third step of your cue card. Speaking after your cue card speaking, your examiner will be asking you for the follow ups. So the follow up first question is, what can we learn from history? इसका मतलब क्या हुआ कि हम हिस्ट्री से क्या सीख सकते हैं? I think from history we can learn our traditional culture and past happenings. For example, from family history we can learn about ancestral work, their profession, and some medical problems that we are inherited today because of transmission from the genital genes. So ट्रांसमिशन फ्रॉम इंसेस्टर जीन्स का मतलब क्या होता है कि जो हमें अपने पुराने बुजुर्गों से कुछ जीन्स के थ्रू ट्रांसमिट होती हैं कुछ प्रॉब्लम्स, हम वो जान सकते हैं जब हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं। हम अपने ट्रेडिशंस को, कल्चर्स को, क्या क्या उनमें हो रहा है, हम वो जान सकते हैं। तो इसमें दो मेन पॉइंट्स थे, ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स, एंड जो हमारी पास्ट फैमिली की हिस्ट्री है हम उसको भी जान सकते हैं। So next question is, how can people get reliable historical informatively? तो यहाँ पे लोगों को पूछ रहे हैं कि इंफॉर्मेशन जो है वो उनको रिलायबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है। तो इसका आंसर हो सकता है, nowadays there are many sources from where one can have reliable historical information. First of all, there is an abundance of libraries nowadays from where we can borrow books to learn historical facts. Secondly, internet is vast. सो आपको दो एस्पेक्ट्स मिल गए हैं, एक तो आप लाइब्रेरी की बुक्स के बारे में बात कर सकते हो और इंटरनेट के बारे में बात कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट से उसमें बताया है इट इज़ जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम अस एंड वी कैन सर्च एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर with facts and figures that makes the information more reliable. So these are the two sources जिसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो अपने एग्जामिनर से कि क्या क्या वो एस्पेक्ट्स हैं जिसके बारे में आप रिलायबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हो। Let's move on to the third question. So it says, how do you think famous historical figures can serve as a model for the young people today? इस क्वेश्चन का क्या मतलब होता है कि कैसे आपको लगता है कि ये जो बहुत सारी फेमस हिस्टोरिकल फिगर्स जो होती हैं, जो मॉडल्स होते हैं, जैसे भगत सिंह है, महात्मा गांधी जी हैं, वो हमें कैसे इंस्पायर करते हैं आज की यूथ को, आज की जनरेशन को? हाउ डू दे इंस्पायर अस? So the answer is C. Many historical figures play a prominent role in his past figures such as Bhagat Singh, Subhash Chandra Bose, Mahatma Gandhi, and so on. I think people can opt them as a role model and can also participate in making today's world better. सो आज के ज़माने में जो बैटल बेटर है वो उसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं जब हम इन फिगर्स को देखते हैं। इसलिए ये हमें इंस्पायर करते हैं क्योंकि इनके एक्शंस जो हैं, इनके फुटस्टेप्स पे हमें फॉलो करेंगे तभी हम एक बेटर सिटीजन जो हैं वो बन पाएंगे। सो यू कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन योर क्यू कार्ड and you can explain them. It's not you have to cram these question answers, it's just these are the ideas so that you can also frame your answers in such way that you are not sitting idle or you're not numb in front of your examiner, you're able to speak in front of them. So our last question would be, डू पीपल इन योर कंट्री लाइक टू विजिट म्यूजियम्स? इसका मतलब है कि क्या आपकी कंट्री में जो लोग हैं उन्हें म्यूजियम्स जाना पसंद है, क्या उनको म्यूजियम्स में विजिट करना पसंद है? सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इफ वी टॉक अबाउट मी, then I can say I don't have any interest in museums. Rather, I can say most of the Indian people like to visit museums because I believe from museums one can get to know about tradition and culture. Apart from that, we can also get to know about very important historical monuments or for the today's generation, which is very important to know.
कि हमें क्या क्या पता लगता है कि एक तो हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के बारे में पता लगता है, जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमें उनके बारे में म्यूजियम्स जाके पता लगता है। कुछ बैटल्स होती हैं जो हमें नहीं पता होती पहले, हमें वो पता लगती हैं। रादर देन हम ये बता सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था पहले, ऑल्दो आई डिडंट हैव, बट अब जब मैं हिस्ट्री के बारे में कुछ पढ़ता हूँ, इट एक्साइट्स मी and I like going to such places where I seek to learn many new things by going to museum. तो आप इसके बारे में भी बता सकते हो. So at last I would say, if you really like the video, hit the subscribe button. Don't forget to share it with your friends and subscribe my channel. Thank you.